आए आज की टीम के अंदर, लेकिन अगर वो कोई भी चेंजेस अगर करते हैं तो इनके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको कम स्कोर करने दें, उनको पार रन्स को टच ना करने दें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी टीम 170 कर देती है तो उसके पास गुड चांस है कि वो पकड़ ले, लेकिन अगर वो 140-50 में आउट होती है तो दूसरे को 15-20 रन का जो है एडवांटेज। और ये बड़ा अच्छा चेंज हो सकता है श्रीलंका वाला, क्योंकि मुझे बॉलिंग भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है हाँ, बॉलिंग भी कर सकते हैं exactly. और बैटिंग मिडिल ऑर्डर इनका काफी स्ट्रगल कर रहा है, तो यानी वो भी बॉलिंग कर लेंदा पहले बैट्समैन है, पहले बैटिंग। भाई मैं बता रही हूँ कि मिडिल ऑर्डर वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज के लिए ये वाली डिबेट है साइड पे, हम पार्क कर रहे हैं इस डिबेट को। आफिर ने एक बात की है ना कि लास्ट मैच में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ कि बैट सेकंड में जो ना वो बॉल इतना ब्रेक नहीं होता, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है कोलंबो की कि यहाँ पे स्पेशली शाम के टाइम पे मैच जो है ना विकेट वो स्लोअर साइड पे चलाते हैं, ऑल दो टर्न नहीं मिलता लेकिन सेकंड बैटिंग मुश्किल हो जाती है। आपके फिर डिपेंड करता है कि आप अपने बॉलर को किस तरह यूटिलाइज करते हो, किस तरह यूज करते हो, लेकिन पिच स्लोअर साइड पे चली जाती है। ये एक चेज हुआ है अभी तक। चलें, आपने बात की, पता करते हैं कि टॉस पे एक्चुअली डिसीजन क्या होती है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो क्या ये बॉलिंग का फैसला करता है, जैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाद में मैनेज करना भी, बट वी आर रेडी विद द टॉस, सो लेट्स हेड ओवर टू मार्क हावर्ड हु इज आउट देयर विद द टू कैप्टन्स। Welcome along to the middle of our Premadasa Stadium here in magnificent Colombo. Big crowd in the house for a hugely significant Super 8 match. We've got the home side, well supported, captained by Dashun here. We've got Mitchell Santner, the captain of New Zealand. Richie Richardson, Sir Richie Richardson, the match referee. The Hyundai toss representative to hand the coin over to the captain of Sri Lanka, Dashun Sri Lanka. Dashun? Tails. Skipper, you won the toss, and the crowd are happy. What are you going to do? We're going to bowl first. So you're going to have a bowl. Now tell me, it was a difficult match versus England. What did the top order learn from that? See, the batters need to take it deep. That was the learning from the last game. Actually, the bowlers did a pretty decent job. So hopefully I expect the same in this game. A tremendous opportunity for your bowlers tonight. New Zealand haven't played in Sri Lanka in the tournament to date. Yeah, true. There might be assistant to the spinner, so they never know what is going to offer today. So yeah, that's the reason we choose to bowl as well. And any changes to your team tonight? One change from the last game. Kamil Mishra out. Charit Asalanka comes in for that. So a change at the top of the order. Yep. Okay, well enjoy this massive crowd. Good luck, Skipper. Thank you very much. Cheers. So Sri Lanka have won the toss. Mitchell Santner, that is 10 straight toss losses for the Kiwis, but we won't mention that, Skipper. Hey, nice to see you. It's been a long time since you've been able to play a game of cricket. Yeah, it's been a few days. Obviously, it was disappointing with the rain the other night, but can't do much about that. But we've had a few more good days training here and getting ready for this big game. The challenge is taking on the Sri Lankan spinners. Obviously, you've been playing in India, but your top order has been outstanding. Yeah, no, it's been good. I mean, you know, different guys have stepped up through different games. This is all you can ask for. Obviously, the two at the top have done a pretty good job, so we'll obviously see what this does. It looks pretty good, and try to get a good score on. And any changes with your team tonight, Mitch? We've got one change. Cole McConchie comes in for Jimmy Neesham. Okay, so a little bit more spin potential in middle order? Yeah, a little bit more spin, but I think it looks pretty good. But we'll see. Obviously, with the dimensions of the ground, I think whoever can be the smartest to the big side is going to have a pretty good day. All right, good luck, Skipper. Cheers, Harry. So the news from the middle. Sri Lanka have won the toss in front of a big crowd here in Colombo, and the Sri Lankans have elected to bowl. Well, they've opted to bowl first. Sri Lanka have won the toss and they have opted to bowl first. यहाँ पे डिस्कशन यही चल रही थी कि कितने स्पिनर्स खेलेंगे, कितने चेक करते हैं पहले टीम सामने आगे। फिन एलन एंड टिम साइफर एट द टॉप, एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर। रविंद्र का तो आपको पता ही है, और फिर पावर हिटिंग आ जाती है फिलिप्स, चैपमैन, मिचेल, डैरल मिचेल का आपको पता ही है। एंड देन देव गॉन इन विद मैकॉन्की एज अ स्पिन ऑप्शन अलॉन्ग विद सोदी एंड फर्गसन टू प्ले द सीम बॉलर। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी पूरी टीम है, बैलेंस टीम है, स्पिन में भी ऑप्शंस हैं। इधर आ जाते हैं श्रीलंका की तरफ, देख लीजिए निशंका एट द टॉप विद कुशल एंड देन यू गॉट असलंका इज बैक एंड आपको पता ही है कि ये स्पिन बॉलिंग भी करा लेते हैं, सो इनका एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। रत्नायके आगे, कामिंडू, मेंडिस आगे, शानका द कैप्टन, हेमंता की आपने अभी बात भी की थी सना ने, वो भी हैं, एंड देन चमीरा एज देयर सीमर, तीक्षाना
as their spin bowling option and Madhu Shankar. So that's the team that they've gone with. एंड वो स्पिन हैवी जो यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी वो हमें एक नज़र आ रही है. श्रीलंका का आना, हाउ डू वी लुक एट दिस? सकलैन, आपसे बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जब आप इस टीम को देखते हैं, कैसे देखते हैं इनको इन दिस साइड? ऑब्वियसली कंडीशन को सामने देखते हुए सनत जयसूर्या ने और कैप्टन ने जो है वो फैसला किया होगा क्या किया है. आई थिंक सनत जयसूर्या जो है वो बड़ा उसका वास्ट एक्सपीरियंस है. आई नो कि इन एंड आउट करना है एक बंदे को, एक मैच में लेके आना और बाहर कर देना, और श्रीलंका अंदर आ गया. बट आई एम श्योर उसको पता है कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है और किस तरीके से प्लेयर्स को, उसके कॉन्फिडेंस को, अगर वो अंदर है तो किस तरह कॉन्फिडेंस बूस्ट करके अंदर लेके आना, अगर कोई बाहर जा रहा है, रेस कर रहा है, तो उसके कॉन्फिडेंस को कैसे प्रिजर्व करना है और किस तरीके से अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो उसको कैसे प्रिपेयर करना, वापस लेके जाना. आई थिंक उन्होंने अपनी जितनी भी कैलकुलेशन की है इस पिच को, कंडीशन को सामने रखते हुए, आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई थिंक गुड लक टू श्रीलंका, जो भी फैसला किया उन्होंने. उमर, बॉलिंग अगर आप देखें, मैं तो खैर श्रीलंका की तो बॉलिंग देखेंगे, लेकिन जिस चीज़ का डर था वो जो उन्होंने उनकी कमज़ोरी को और एक्सप्लॉइट करना है, 5 स्पिन ऑप्शंस के साथ गया है न्यूजीलैंड आज, कंपेयर टू उनके जो 2 पेसर्स तो हैं ही उनके पास, लेकिन 5 स्पिन ऑप्शंस, फिलिप्स, मिकॉन्की, सोदी, सैंटनर और रचिन. देखिए मेरे ख्याल से ऑब्वियसली वो कंडीशन को भी देखा होगा, वो वहाँ पे मौजूद है, उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो कि यहाँ पे किसको ज़्यादा सूट कर रहा है और हमें क्या सूट कर रहा है हमारी टीम को. तो मैं भी वो भी एक रीज़न हो सकता है कि कंडीशन के हिसाब से. सेकेंडली उन्होंने आई एम श्योर ये भी देखा होगा कि श्रीलंका की टीम में कितने लेफ्ट आर्म बैटर्स हैं. उनकी कमजोरी को ज़्यादा देखा है स्पिन के अगेंस्ट. हाँ, तो वही ऑब्वियसली जो लास्ट मैच उनके श्रीलंका जिस तरह खेले, जो कैंडी में खेला है, तो उनके आई एम श्योर कि उनके जो बैटर है वो उनकी जो शॉट सिलेक्शन भी सही नहीं थी, स्पेशली स्पिनर्स पे, और वो अच्छा भी नहीं खेल रहे थे. एक ये भी रीज़न हो सकता है. सेकंड ये रीज़न ये भी हो सकता है कि लेफ्टी खेल रहे हो. थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि कंडीशन और ज़्यादा सूट कर रहा है. तो मेरे ख्याल से जिस तरह हमने अर्ली ऑन कहा था कि न्यूजीलैंड सॉर्टेड है, वो 15 स्क्वाड में उनके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल, चाहे आप पेसर में चले जाए, स्पिनर में चले जाए या उनके बैटिंग चले जाए. तो आई थिंक वो कंप्लीट सॉर्टेड टीम है. उन्होंने अपने दोनों पेसर सेक्रीफाइस नहीं किए, वो रखे हैं उन्होंने. खैर ये अभी कॉम्बिनेशन है. आपको बताते चलें कि श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया आज के सुपर 8 के मैच में जो प्रेमदास में होगा. हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैच.
वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है और बात हो रही है श्रीलंका न्यूजीलैंड के मैच की। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। अब ये देखना है कि न्यूजीलैंड क्या टोटल देखता है। कुछ फैक्टर्स हैं हफीज, एक तो ये कि उन्होंने सारे मैचेस जो हैं खेले थे अभी इससे पहले इंडिया में 175 करते ही रहे हैं। ये इन्होंने चेस करके 3 जीते हैं, 1 हारा है पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब आज जब यहाँ प्रेमदासा में पहली आउटिंग है, कुछ फैक्टर्स आप जानते हैं, देखेंगे ऑपोजिशन कंडीशंस, फिर अगर अपनी बॉलिंग वीक है तो शायद पार स्कोर से 15 ज़्यादा, और ओके है स्ट्रॉन्ग है बॉलिंग तो आप कहेंगे जी पार यहाँ पे 173 है। क्या टोटल सोच सकता है न्यूजीलैंड अगेंस्ट देयर ऑपोजिशन आज के लिए? देखिए जो कंडीशन हमने देखी है, ये स्टैट्स तो बहुत से मैचेस का मजमुआ निकला होता है ना कि पार स्कोर यहाँ पे ये बताया जा रहा है एवरेज फर्स्ट इनिंग। आज की जो पिच नज़र आ रही है, जो उन्होंने बात की रसल आर्डन ने कि ये स्पिन कंड्यूसिव होगी, यहाँ पे स्पिन टू विन है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा कि सारों इन्होंने भी स्पिनर ऐड किए, उन्होंने भी किया। तो मैं समझता हूँ कि 165 प्लस अगर ये करते हैं, 165 या 160 प्लस करते हैं, दे विल हैव अ बेटर चांस। और प्लस वो इतने स्पिनर्स जो उन्होंने ऐड किए हैं, दैट विल आल्सो हेल्प। सना, अगर आप इनकी बात करें, इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें या स्पिन ऑप्शंस अगर आप देखें, तो वो बाद में कितना इसका रोल होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड इनिंग्स, नॉट द फर्स्ट इनिंग्स। बड़ी अच्छी वहाँ पे बात कोई की, ड्यू फैक्टर वगैरह कोई है या इतना नहीं? नजर नहीं आया। बड़ी अच्छी बात की हफीज भाई ने भी, सिकंदर ने बताया 5 स्पिन ऑप्शन से जा रहा है आज न्यूजीलैंड, और उसका एक बहुत बड़ी वजह श्रीलंका के बैटर्स का जो वीकनेस है अगेंस्ट स्पिन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें शामिल होगा। अब वही बात है, सैंटनर इतने ज़बरदस्त, हमने जितनी उनकी कैप्टनसी देखी है अभी तक तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी की है, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत है। 5 स्पिनर्स, स्पिन ऑप्शंस में 3 आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऑप्शन बहुत होगा कि कैसे वो मैचअप में यूज़ करेंगे। ऑफ स्पिनर भी है, लेग स्पिन भी है और लेफ्ट आर्म स्पिन भी है, उसके बाद ऑलराउंडर्स भी हैं। तो आई थिंक उस तरह से काफ़ी सॉर्टेड होंगे। लेकिन एक चीज़ होगी कि थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाएंगे। जैसे हमने बात की, सारे मैच चेज में जीते, एक ही मैच हारे जो टारगेट सेटिंग में था, और आज फिर टारगेट सेट करना है इन अ कंडीशन जिसमें उन्होंने पिछले नहीं खेला, पहला ही मैच खेलने जा रहे हैं, और काइंड ऑफ अ प्रेशर मैच है क्योंकि पहला एक मैच वॉश आउट हो गया। तो शुरू में नर्व ज़रूर होंगी, वही टाइम है श्रीलंका के पास कि अगर शुरू में अर्ली नर्व्स पे इनको पकड़ लिया तो वहाँ से श्रीलंका पकड़ सके। एक दफ़ा फेन एलन और टिम साइफर चल गए तो वहां से वापस आना। जिस तरह आप चल रही हैं आजकल प्रेडिक्शन चार्ट्स पे, यू नो, एट द टॉप ऑफ द प्रेडिक्शंस टेबल, सना मीर इज एट द टॉप, एंड आई थिंक आज सही हो जाएंगे। आज नहीं, ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों वो पिक करेंगे, टीम क्यों पिक करेंगे। उमर से स्टार्ट करते हैं जी। मैं अभी इधर से स्टार्ट करती हूँ ना। कौन जीतेगा? प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड जीतेगा, और मेरे ख्याल से ये भी बताना है, टाइम है हमारे पास 3-4 जो कंडीशन उन्होंने देखी है, ऑब्वियसली जो जिस तरह की कंडीशन होने का एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाला है, तो आई थिंक न्यूजीलैंड की ट्राई होगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह की कंडीशन और जो दोनों टीम ने स्पिनर्स वगैरह डाले, तो 160 इज द विनिंग स्कोर। 160 इज अ विनिंग स्कोर। आपने सुन लिया उमर गोल से जी। सना, न्यूजीलैंड। अच्छा, आपका क्या रीजन है? यही, आई थिंक ओवरऑल इनके बैटिंग में 5-6 बैटर्स सबके सब ने परफॉर्म कर दिया है। श्रीलंका की बैटिंग अभी भी उतनी सॉर्टेड नहीं है, और इस कंडीशन में मुझे लगता है इनके फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों को हेल्प मिलेगी। आपकी प्रेडिक्शन पे कल लोग खुश नहीं थे, लेकिन एंड में सही साबित हुई। एंड में सही साबित हुई। उसका बड़ी तकलीफ दे प्रेडिक्शन होती है जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारी टेक्टिकल, जो मुझे लगता है कि हम लोग इतने तगड़े नहीं है, जो कि थ्रू आउट नजर आ रहे हैं। जी हफीज। न्यूजीलैंड। अच्छा, अब आपने कहा कि मैं सना के साथ चलूं। नहीं, देखें, वो तो कल भी इंग्लैंड में थे मेरे साथ। वजह सिर्फ ये है कि मेरी मर्जी जैसे हसन की मर्जी। अच्छा, मेरा सवाल प्रेडिक्शन देने से पहले, सिकंदर, कौन सी टीम जीतेगी तो पाकिस्तान को फायदा होगा बताएं। मैं तो इसीलिए श्रीलंका के साथ हूं। बस मैं भी श्रीलंका के साथ हूं। पाकिस्तान को फायदा ये होगा। बेस्ट लॉजिक है। खत्म। क्यों जीतेगी? क्योंकि पाकिस्तान का चांस बनेगा। अगर खैर वो उसमें तो फिर भी स्टिल मौका है। न्यूजीलैंड अगर आखिरी मैच इंग्लैंड से हारता है तब भी मौका है। नहीं जी, बट आपकी वर्किंग पूरी है ना? जी जी, बस मैं आपके साथ हूँ। पाकिस्तान को फायदा श्रीलंका जीतने में, श्रीलंका जीत। ठीक है, मेरा अभी तक सिर्फ एक पॉइंट है, इसलिए मैं सना के साथ जा रही हूँ। मैं लिख रही हूँ न्यूजीलैंड, क्योंकि मेरा ये भी बड़ा अच्छा वो नहीं होता जब एग्जाम में सिलेबस में आता नहीं है तो फिर आप दूसरे बंदे को थोड़ी सी देख के चीट कर लेते हो। अब बीच मैच में मुझे मैसेज मत करना कि गलत करा दी। नहीं, इसमें ये हो सकता है मेरा इम्पैक्ट आप पे हो जाए। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह वो करे।
अल्लाह करे कि हमारी प्रेडिक्शन गलत हो लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। बिल्कुल चलिए, दोनों बात टीम में पे हार ड्रॉ जीत पे आई पाकिस्तानी गई है। ना एंड में। ऑलराइट, चलिए इंशाल्लाह भाई, अच्छे से अफ्तारी करें आप चारों पांचों, और हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे मैच के बाद और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट एंड एंजॉय द गेम। Along with the Emirates cabin crew. Sri Lanka, Colombo, a beautiful part of the world. See right there on the west coast of Sri Lanka. Wonderful nature, magnificent friendly people, so many things to see and do. Sri Lanka tonight, well, they need to win. They take on the Kiwis. There's Auckland, Hobbiton and their man in charge, Mitchell Santner. So a massive game coming up. It's the home side, Sri Lanka. They are taking on New Zealand here in Colombo. Big crowd coming to see the home team in attendance. Sri Lanka, who started the tournament well but have dropped their last couple of games. They're up against New Zealand, who haven't played for a while. They started in India. They had a washout in their last start. But a hugely important game. England, 4 points. They're looking to make their way through to the semi-finals. So New Zealand, they can lose and still be involved. Sri Lanka lose tonight, their tournament is effectively done. And all the talk around Colombo today about whether the home side can reverse a couple of losses, a big defeat to England and a loss prior to that to Zimbabwe. They need to win to keep their tournament alive. What a sight that is here at Premadasa. Beautiful night for cricket. Sun's been shining all day, no weather around. We are set for a wonderful, wonderful evening. Good.
match official tonight. On field, Mr. Palakar, Mr. Yakub. TV umpire is Rod Tucker. The match ref is the great Sir Richie Richardson. Mitchell Santner, New Zealand lost their 10th straight toss. A huge roar as Dasun Shanaka won the toss. He elected to bowl. Black Caps also well supported. They played their first game here in Sri Lanka. Their preliminary rounds were over in India. How will they go on these spinning wickets? Ladies and gentlemen, if able, please rise for the national anthem of New Zealand, followed by Sri Lanka.
Not a dry on the place and not too many spare seats either. It's pretty much a sea of yellow as Sri Lanka wear their national colours. They're selling those shirts out on the street. They are going like hot potatoes because this is a game of real significance for the host nation. A lot of feeling around the ground prior to the match. And as we head to first ball, it's also very, very important for New Zealand as well. Van Allen, Tim Seifert will do the honours to start with Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Mark Chapman, Darryl Mitchell and Mitch Santner. Plenty of batting there, and that's added to by Cole McConkey coming into the side tonight. That's for Jimmy Neesham, Henry, Sodhi and Ferguson, and Russell Arnold, Sri Lanka. Yeah, one change. The former captain Charita Salanka comes in at number 3. The rest of the team stays the same. Nisanka, Kusal, they are crucial right at the top, and then there's spin and a little bit of seam later on. There is a lot of importance about this for Sri Lanka. They slipped up in their very first game and then have put themselves into a very dicey situation if they don't get it right tonight. Good evening to Angelo Matthews. You'd know all about this pressure. Good evening to all of you. Yeah, what a day. What an atmosphere. And such a big game for both the teams, New Zealand and Sri Lanka. Sri Lanka would want to win this to stay alive in this competition, whereas New Zealand will be trying to get those 2 points and make way for the semi-finals. Well, Smithy, turning pressure into pleasure. That's what this big crowd is here to witness. Couldn't have said it better myself, Rusty. It is really buoyant feeling around this ground, around the stadium, getting here nice and early, and already they were lining up in the streets. And they've come here for one reason and one reason alone, to see their team march on in this competition. They've won the toss and elected to bowl first. I don't mind the decision. That's been their strength. They like to chase, know what they're going after. The pitch on the slower side, but I don't see it changing much. It's about using it smartly. Van Allen, Tim Seifert, amongst the runs, powerful hitters right at the top, but these are different conditions for them. Slightly slower. Just hang it out there and see what they have. Come and get us. That's the message. The other thing about it too is Tim Seifert will be on strike first up, is that these boys haven't played a game for a while. They had a rain out against Pakistan. I spoke to several of the players and the coaching staff, and they said they can't wait. They're getting itchy feet sitting in the hotel and playing in the nets, so they've been looking forward to tonight with relish. So Van Allen and Tim Seifert will be there together. He's a dangerous player. They're both very, very dangerous in this power play. Madhushankar, left-armer. He should use the new ball, in my opinion, because he can bring it back in. Any left-armer who does that is dangerous. Well, 8 days, Kiwis of the past, wonder what they would have been up to, but these guys are real professionals too. Smithy. All lining up down the streets, fellas. And they have 2 fielders out on the onside, Sri Lanka, in case they can get some left-arm swing in, and Allen looks to hit over the top of mid-on or down towards square leg. And Seifert too, and they've got a short mid-off. First ball of a very important match. And a bit of movement off the surface, a bit of bat, a bit of pad, New Zealand underway. And Madhushankar will be trying to swing the ball into the right-hander. It's a good length that he bowled up front. He should be bowling that length right throughout, especially with the new ball. There you see the angle across and then straightens down. That's what Madhushankar can do for you. The fact that there's a fielder just next to the cut strip, just trying to force the batters to change the angle of the bat rather than hit through. Maybe that in-swinger will sneak through. An intriguing position. It's not very often seen. You see it in Test cricket quite a lot after a while, but you don't see it very often in white ball cricket. So well done, Sri Lanka, and their think tank have done some homework here. Movement back in again. Van Allen and Tim Seifert, their partnerships in T20 internationals in the last year have averaged 60 at 11.89.
Yeah, with this field, Dilshan Madhushanka would be expecting the batter to go through extra covers, create that gap between bat and ball.